In this video, we will discuss about the 8 parts of strength of material. The topic is moment of inertia or second moment of area. So, moment of inertia is the quantitative measure of the rotational inertia of a body. So it is basically the opposition that the body exhibits to having its speed of rotation about an axis altered by the application of torque or twisting force. Here you can see the application of torque about the specific axis, this axis. The axis may be internal or external or may not be fixed. The moment of inertia, however, is always specified with respect to the axis, and it is defined as the sum of the products obtained by multiplying the mass of each particle in a matter that you can see here. If we say the particle here of mass m1, then it will be the product of square of the distance from this axis. Let the distance from this axis is r. So moment of inertia is indicated by the symbol I. So I about the axis x, always we are writing the moment of inertia in this symbol. Here the symbol for moment of inertia is I, and about the axis x, which is written as the subscript, is equal to m1 r1 square. So m1 r1 is the moment of this mass. If we multiply again r1 with m1 r1, then it will provide us the moment of inertia. So the moment of inertia is nothing but the second moment of the mass. So it is always obtained by multiplying the mass of each particle of matter in a given body by the square of its distance from the axis. And this I is equal to m r square. So r is nothing but the radius of gyration. So what is the radius of gyration? So here you can see what do you mean by the radius of gyration. So I is equal to m into r square. So r is equal to I by m, or root over, it's the ratio, root over of the ratio of I by m. So while revolving, it is forming a circle, and if we assume the axis at center, then this radius is known as the radius of gyration. Or while revolving it is forming a radius, and that radius of rotation is nothing but the radius of gyration. So that radius of gyration can be found out by taking the square root of the ratio of moment of inertia and the mass of the object for which we are calculating the moment of inertia. If the mass of the whole object is m, then here the m is the mass of the whole object. See here, suppose a book is there. Here I am trying to bend this book in this direction as well as in this direction, but in this direction it is quite difficult, but in opposite direction it is quite easier. Okay, so in this direction the moment of inertia of that object is that means here I am trying to
apply the bending forces. Here I am trying to applying the bending forces in this direction. So the moment of inertia about this direction is less as compared to this direction. So moment of inertia about this direction is very high, and the moment of inertia about this direction is very low. That is why whenever I am applying the moment about this axis, it is bending easily. But instead of that, whenever I am applying the forces in this direction instead of this axis, then the moment applied over this direction, that means here you can see the moment applied over this direction, because of high moment of inertia in this axis, I cannot bend easily in this direction whenever I am applying the moment. Now we will discuss about the parallel axis theorem. The parallel axis theorem is also known as the Eigensteiner theorem or just the Steiner theorem. And this parallel axis theorem states that if two axes are parallel to each other, and if we know the moment of inertia of a body about any of the two axes, then the moment of inertia of the body about other axis can be found out by taking the sum of the moment of inertia of the body about the known axis and the product of area of the whole body and the square of distance between these two parallel axes. For example, if the moment of inertia of this whole body is to be found out about z dash axis, which is not known to us, then in that case we need to find is z dash is parallel to any other axis. Yes, z dash is parallel to this axis z. And if we know the moment of inertia of this body about z axis, then in that case we can write Iz dash is equal to Iz plus area of the whole body and the distance square of the distance between these two parallel axes. I hope this is clear to everyone. So parallel axis theorem states that, so we can write the statement of parallel axis theorem which I have already explained. Now let us discuss about the perpendicular axis theorem. If we know the moment of inertia of this body about any x or y axis, then we can determine the moment of inertia of the same body about the another axis z, which is orthogonal to each other. So Iz is nothing but the summation of Ix and Iy. So it is the summation of moment of inertia about z axis, x axis, and moment of inertia about y axis. So this Iz or moment of inertia about z axis is also known as the polar moment of inertia, and this x, y, z should be orthogonal to each other. That means the angle in between these three axes must be 90 degree. Otherwise we cannot apply this perpendicular axis theorem. So let us discuss about some moment of inertia of known objects. तो रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस में हम निकालना चाहते हैं तो सेंट्रोइड रेक्टेंगल का कहाँ पर आएगा, तो इस डायमेंशन का जो हाफ होगा और इस डायमेंशन का जो हाफ होगा जो इंटरसेक्टिंग होगा, तो उसी पॉइंट पर सेंट्रोइड आ जाएगा. तो अगर कोई एक्सिस सेंट्रोइड के बीचों बीच पास करके जाता है तो उसको बोला जाता है सेंट्रोइडल एक्सिस. तो यहाँ पर दो सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक तो है एक्स एक्सिस एक्स डैश और दूसरा जो है वाई डैश.
तो और बेस के थ्रू भी हमने दो एक्सिस को पास किया हुआ है, तो एक्स से बेस के द्वारा पास किया गया है एक एक्सिस और वाई है, ठीक है, ये हाइट के द्वारा पास किया गया है। सो वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल अबाउट एक्स डैश एक्सिस डायरेक्टली। अगर हाइट है एच रेक्टेंगल का और विड्थ है बी, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश एक्सिस इज बी एच क्यू बाई 12। यहाँ पर एक्स डैश एक्सिस जो जिस किसी भी डायमेंशन को कट कर रहा है, जस्ट यू टेक द क्यूब ऑफ दैट मीन हियर द एक्स डैश एक्सिस इज कटिंग द एच डायमेंशन, देन यू कैन टेक इट्स क्यूब, दैट मीन बी इंटू एच क्यूब। यहाँ पर वाई डैश एक्सिस कट कर रहा है बी डायमेंशन को, सो वी कैन टेक बी क्यू इंटू एच और डिवाइडेड बाई 12। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ओके, अब आता है बेस के जो एक्सिस पास कर रहे हैं, बेस में जो एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्चुअली इसका डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन हम ज़्यादातर कभी कभार ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैं डेरिवेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, तो बाद में आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू याद रखेंगे और इसको लेकर हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज बी एच क्यू बाई 12। अगर ये बी के थ्रू पास करके जाते हैं तो अपोजिट डायमेंशन जो एच होता है उसका क्यूब आप ले सकते हैं। यहाँ पर एच के द्वारा पास किया जाता है एच के थ्रू में, तो आप बी का क्यूब ले सकते हैं, बी क्यू एच बाई 12। सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई। सो हियर वी हैव एडेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई। सो फॉर द ट्रायंगल द centroid is lies at a distance of 2h by 3 from the apex and h by 3 from the base. So if the axis x dash is passes through the centroid, then the moment of inertia of the triangle about centroidal axis is bhq by 36. Just you have to remember. And if the axis passes through the base, then the moment of inertia about x axis is bhq by 12. So for the circle it is pi r to the power it is a pi r to the power 4 by 4 if the axis passes through the centroid of the circle. So the diameter of the circle is same at all points, that is why the moment of inertia for this circle is same at all points. So all we know that for the bridges we are making the pillars of circular cross section because of this region only, because the region is the for the circular cross section the moment of inertia at all direction or at all axis about at every axis is same, that is pi r to the power 4 by 4, or we can say in diameter form, that is pi d to the power 4 divided by 64. Okay, so this is the moment of inertia of the circle about the centroidal x और y axis, सेम होता है दोनों के बीच में। सो उसी तरह हम कुछ सेमी सर्कल का भी ले सकते हैं। तो सेमी सर्कल का जो आ जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, एक्चुअली सर्कल अगर होता तो ये होता सेंट्रोइडल एक्सिस। अब सर्कल का आधा पार्ट निकल चुके हैं तो ये बेस हो गया, तो सर्कल का जो सेंट्रोइडल एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज पाई डी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। और आता है जो क्वार्टर सर्कल का, ठीक है, क्वार्टर सर्कल का जो आता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू, दैट इज पाई आर टू द पावर 4 बाई 16। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर भी आई एक्स प्लस आई वाई ही हो जाएगा। और इलिप्स के लिए पाई ए बी क्यू बाई 12 आई एक्स के थ्रू और आई एक्स के अबाउट में पाई ए क्यू बी बाई 12, और जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इन दोनों का समेशन। So I hope you have
understood the concept and information that was given to you regarding the moment of inertia. If you have any doubt, then you can post some comment in my comment section, or in the next class we will discuss about some problems regarding the moment of inertia. So thank you.